Good evening, everybody. This is Aniruddha and I welcome you everyone to channel The Civil Guruji. कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी एक बार सेशन को कर दीजिए like and share so that everyone can enjoy this wonderful session over here. A very important session for all of you people. लेकिन यार आप लोग बात नहीं मानते हो. आप लोग 100 likes अभी तक पिछले वीडियो कर चुके हैं. तो अगर ऐसा होगा then it would be difficult for me to come again for you people. तो सबसे पहले तो आप लोग एक बार लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को. That's the most important thing. Okay, everybody, just hit the like button once and share the session with other people so that everyone can enjoy these sessions. I've got some questions already. Sandeep Patel, Namaste sir. I got an NIT Surat transportation. Okay, can I get IIT Roorkee, Kharagpur, Hyderabad environment, water resource technology? Okay, what's the need of it? वही सवाल हम इस क्वेश्चंस में इस वीडियो में आपके सामने लाएंगे. That what are the main issues that people actually face over here? देखो, if you see the IIT Bombay, like IITs, उसके जो placements है, उसके placement में आप देखोगे that yes, almost every department has 100% placement. That's good. If you see about IIT Madras on the other hand, जैसे कि कुछ branches है in IIT Madras where people are getting very high packages. जैसे for example, branches like mechanical also, some people are getting high packages. जैसे देखो, some people have got 6.25 LPA minimum package and median 15 lakh. Maximum तो किसी को मिल गया 49.7 LPA, but obviously that's unknown core thing. Electrical में देखो, computer science and now you can see in civil lowest package 6 LPA, highest package किसी को मिला है that is your 19.5 LPA in Madras. Okay, but if you see the percentage of the people getting placed in Madras, that is also very good. Right now, if you see M.Tech in ocean engineering type of जो चीजें हैं. Now why I'm comparing, आप बोलोगे सर the comparison should be in between old NIT versus new IIT. But the thing is that the cutoff, if I see the cutoff actually, the cutoff for these branches and the old IIT, old NIT high branches, they are almost quite the same. That's why actually I am saying this. By the way, सभी लोग एक बार like and share कर दो सेशन को. सभी लोग एक बार. I'm talking about CTM also, so don't worry about that. Okay. सेशन इज ऑलरेडी लाइव, तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो है जल्दी जल्दी सेशन पे ज्वाइन कर ले. एंड बाय द वे, दो लिंक यहाँ पे मैं पिन भी कर चुका हूँ, वन ऑफ द पिन्ड कमेंट्स एंड स्टफ. तो सबसे ऊपर जो पिन्ड कमेंट है एक्चुअली देयर पीपल कैन रजिस्टर फॉर द एंड ऑफ रीजन सेल जो चल रहा है एक्चुअली, ऑफ सीजन सेल. एंड ऑफ सीजन सेल में आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन avail around 20% extra off for all our course for civil, mechanical. सिविल के लिए मेनली है एंड अदर ब्रांचेस के लिए मेनली एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है. अदर ब्रांचेस so like Divyam has asked a question over here. Sir, I got IIT Roorkee Dam Sept. Is it good branch? Good in respect of what? That's the main thing I wanted to address over here. देखो, जैसे people are getting these branches, but my experience I am saying over here apart from my Hyderabad CSE and IIT Triple I Delhi CSE, obviously Hyderabad CSE anytime any day. Okay. अब इन सब ब्रांचेस में देखो, अगर आपको नॉन कोर टाइप ऑफ प्लेसमेंट में जाना है, व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज सपोज एनीबॉडी हैज गॉट IIT Madras Ocean Engineering, suppose you have got this branch. Now the point is that there are people from other branches are also there. You are not your only competition, understanding? But for example, in NIT, in the same thing, you are getting a particular branch, okay, where only civil people or mechanical people are allowed. Obviously, the competition is lessened. Understanding? जैसे IIT गुवाहाटी का प्लेसमेंट देख रहा था. IIT गुवाहाटी में if you see the civil engineering placement, that is around your 67%. On the other hand, mechanical overall placement around
75% है। डिजाइन एंड थर्मल में अराउंड 90% एंड 85% प्लेसमेंट है, एंड बाकी ब्रांचेस भी 70 टू 80% के बीच में प्लेसमेंट है। अर्पित सर कंफ्यूजन, एनआईटी के सीडीएस ऑब्वियसली, do I continue in CCMT? Have you already got NIT के CDS? I don't think so, right? गेट्स को 586 सिविल, क्या आपका कैटेगरी क्या है अर्पित? If you have already got NIT के CDS, then obviously go for that. That's a absolutely great branch. Now talking about IIT Guwahati, IIT Guwahati के अगर मैं branch wise मैं आपको बताऊं, then you can see in IIT Guwahati. Now why people are confused and stuff. That's why I'm saying you look at it. In IIT Guwahati, people are confused regarding the different branches. Now if I say about civil engineering, right? Environmental engineering 82.35% people are getting placed. गुवाहाटी में अगर ये सब ब्रांच किसी को मिला है, बायोटेक्नोलॉजी की हालत बहुत खराब है वहां पे, मोस्टली पीपल गो फॉर रिसर्च, बट पीपल विद दिस काइंड ऑफ ब्रांचेस, इंटेलिजेंट साइबर फिजिकल सिस्टम, देखो 100% प्लेसमेंट है, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट साइंस। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 83% प्लेसमेंट, but look at the other branches, it's not that good. Even structural engineering has 73-74% placement, transportation में around 50% placement, water resource में भी, ये transportation में actually गलत डेटा है, ये ट्रांसपोर्टेशन में वाटर रिसोर्स का डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन में भी अराउंड 70% प्लेसमेंट था, डोंट वरी। ओके, बट एनवायरमेंट इज द बेस्ट इन सिविल। कंप्यूटर साइंस में 100% प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑलमोस्ट 80 to 100% प्लेसमेंट है। इंटरडिसिप्लिनरी में देखो डेटा साइंस अगर किसी को मिला इन IIT गुवाहाटी, यू कैन एक्सपेक्ट 100% प्लेसमेंट ओवर देयर। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूं, देन यू कैन सी दैट इन कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स ऑल दिस का कट ऑफ कम जाता है, बट पीपल को क्या है कि लोगों को सिर्फ कट ऑफ से मतलब है, उनको लगता है कि कट ऑफ हाई है इसका मतलब जो बहुत अच्छा ब्रांच है, ऐसे बिल्कुल ही नहीं है। यू कैन सी इट क्लियरली, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स इज 100% प्लेसमेंट। ओके, नॉट इवन मशीन डिजाइन, नॉट इवन मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, नॉट इवन एरोडायनामिक, किसी को भी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में नॉन कोर प्लेसमेंट होता है, यू आर अलाउड, दैट्स द मेन थिंग एक्चुअली ओवर हियर। IIT धनबाद, सम पीपल वर आस्किंग अबाउट IIT धनबाद। ओके, सबसे पहले मैं IITs के बारे में बताता हूँ, देन एक्चुअली I will also show you about your NITs. Okay, IIT Dhanbad, if I say, then people are confused regarding some of the branches, like say applied geophysics. Okay, so applied geophysics, this kind of things, actually applied geology, applied geophysics, around 40 to 50% placement is there. Chemical engineering around 60%, civil engineering around 40% placement is there, not that good. But if you talk about environmental, particularly environmental science and engineering, there you can see around 66% placement is being recorded, which is very good. Computer science engineering 89%, data analytics 80%. Look at the package of computer science and engineering. Some people are curious about that also. सिविल इंजीनियरिंग के पैकेजेस जो है 7 to 18 LPA के बीच में, कंप्यूटर साइंस के 10 to 44, डेटा एनालिटिक्स के 10 to 18 LPA के बीच में पैकेजेस। तो पैकेज भले ही कम है, बट प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छा है, अराउंड 80%। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इन IIT धनबाद, सम पीपल आर कंफ्यूज रिगार्डिंग दैट। तो यहाँ पे भी देखो अच्छा प्लेसमेंट है, बट प्लेसमेंट पैकेज कम है, अराउंड यू कैन सी 6 to 22 LPA के बीच में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के 6 to 15 LPA के बीच में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अराउंड 71% प्लेसमेंट इज देयर, and mining engineering around 80% placement is there. Again, Dhanbad is known for mining stuff. Okay, hello Shravan, Uday Shankar Prasad, Nilesh Sahu, IIT Dhanbad, Aeronautical Science and Engineering। देखो चूज आपको करना, मेरा काम है आपके सामने डेटा जो है वो बताऊंगा, वो बताना, सारे के सारे डेटा आपके सामने मैं रखूंगा जरूर। नाउ द चॉइस इज योर्स। 40 people are watching and only 30 likes, 45 people are watching। तो जल्दी जल्दी यार, इतना तो काम कर ही सकते हो आपकी एक, फटाफट से लाइक और शेयर कर सकते हो। IIT भुवनेश्वर, इस IIT को लेके यार कंफ्यूजन का एंड नहीं है, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे चीजें बोल रही है। देखो प्लेसमेंट वाइज अगर मैं कंपेयर करूं, देन इफ यू सी द पैकेजेस ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, देन द पैकेजेस आर नॉट दैट ग्रेट, बट द परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट वाइज इट्स रियली गुड। आप यकीन नहीं करोगे, IIT भुवनेश्वर में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में लास्ट टू लास्ट ईयर जो है, ये तो 2023 का देखो जो लास्ट टू लास्ट ईयर है, ट्रांसपोर्टेशन 100%, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 80%, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में 100% प्लेसमेंट हो चुका है। दिस इज द ओनली IIT, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ओनली IIT अपार्ट फ्रॉम IIT मद्रास वेयर 100% placement is being recorded in geotechnical engineering.
एकमात्र IIT है ये, ओके, विच इज डेफिनेटली अ गुड थिंग बाय द वे। बट आप पैकेज देखो, 6.25 LPA, एक को किसी को, एक या दो को 14.45 LPA मिला है, बट डोंट गेट ड्यूप्ड बाय दैट। पीपल आर लाइक, not like, that everybody had got the same, package of 14.45 LPA and stuff like that. Okay, जल्दी जल्दी सब लोग एक बार लाइक और शेयर कर दो। IIT Jammu tunnel versus NIT Silchar geotechnical. I will personally go with Jammu tunnel if you will, if you are looking for placements only, and I will ask you to float because NIT तो अभी सिलचर में आपको जियोटेक मिला है, फ्यूचर में बहुत सारी चीजें मिल सकता है। Look at IIT Bhubaneswar, the other things, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में 87% प्लेसमेंट है, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन, थर्मल, दोनों में 100% प्लेसमेंट है। So that's the main thing actually. Now people are getting confused regarding different कि सर हमको जो है पैकेज नहीं मिल रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स। देखो दोनों चीजें हरदम बहुत सारे केसेस में एक साथ नहीं मिलता है। समवेयर यू गेट एन एश्योरेंस ऑफ द हायर परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट्स, ओके, बट यू मे नॉट गेट वेरी हाई पैकेज ओवर देयर, ओके, सो दैट्स द थिंग। टॉकिंग अबाउट आईआईसी बैंगलोर, आईआईसी बैंगलोर में भी आप देखोगे जो है अराउंड अराउंड 70% के आसपास प्लेसमेंट है। आईआईटी दिल्ली में भी इफ यू से अराउंड हाईएस्ट पैकेज जो है अराउंड 15 LPA के आसपास जा चुका था, okay, but again a very few people have got it. Placements were very less in rock engineering, climate science and all these things in IIT Delhi, but in IIT Delhi CTM almost 90% placement was recorded. Highest package was 11 LPA in core the CTM, which is a very good thing. Talking about IIT Hyderabad, some people were also very much curious about IIT Hyderabad कि सर IIT Hyderabad में placement होता भी है या फिर कैसे सब बोल रहे जो है। Now I was watching that in IIT Hyderabad, everybody got placed in departments like structure and transportation, especially. If you take an example, an overall example, climate change जो है उसमें around 50% placement है, and mostly non-core वाले placement ज़्यादा है। E-waste management में भी around 50% ही placement है। Energy science and technology में around 83% placements was there. E-waste management में sorry 80% placement was there in e-waste management, e-waste resource engineering and management, 80% placement was there in IIT Hyderabad, although cutoff was very less. People were, you know, very much concerned about your placements in this particular thing, but e-waste management also has recorded 80% placement. Okay, very low cutoff. But again, all the companies that will be visiting e-waste management, it's an interdisciplinary branch. आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो, in an interdisciplinary branch, what happens is that people from different branches would be competing with you. It's not only you and your branch. Okay, that's an added advantage in this particular NITs. Will this good placement remain in IITH after 2 years? I am not an astrologer. Okay, that's the first thing I wanted to say you. So obviously I can say you about the current scenario. Okay, so obviously it actually changes, the market scenario changes actually, because in geotechnical, especially in civil engineering background, if I say, it dropped some extent. IIT Tirupati Structural Engineering, Babu Malothu, around 75% placement was being recorded, and the packages were in between 6 to 9 LPA. Okay, that's the thing. Now computer science engineering around 92% placement was there. Chemical engineering 74%, chemistry around 41%, artificial intelligence around 88% placement was there. Even people in engineering science have recorded 83% placement, which is a very good. Smart mobility, there was a branch in IIT Hyderabad, very low cutoff. Many people have got it actually in IIT Hyderabad, and people have actually got 100% placement over there in this particular thing, which is a very good thing. Talking about IIT Palakkad, in IIT Palakkad also people have got placed well. In IIT Palakkad, in M.Tech, you can see data science, always everybody got placed with the packages in between 95 to 9.5 to 32 LPA. M.Tech computing and mathematics, if you see 100% placement is there in between 6.6 to 16 LPA. M.Tech system on chip design 87.5. Power electronics, power systems not that great. Manufacturing, material engineering, everybody got placed. Geotechnical engineering around 70% placement is there. But look at the package. Now that is my point actually.
Suppose if you are joining IIT Kharagpur environment around 600, and at the same 600 score of your, you can get CTM or structure in the top NITs. Now, if I compare IIT Kharagpur environment where only 70%, less than 70% placement was recorded, okay, 67.8 or 67% almost placement was recorded. Mostly core companies have provided 6 to 9 LPA package, and 2% or 3% I guess have got packages of around your 17 LPA was the highest package of environmental. So that is the story. Now, not everybody has got that package, right? But if you see at the same score, people are getting, say, NIT Suratkal CTM or NIT Warangal CTM, where the placement percentage is 96%. I will show you just right now. Okay. IIT Roorkee के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, then in IIT Roorkee people have got in between 7.1 to 12.6 LPA packages over different branches. And one second, let me just present before you the data also. IIT रुड़की में कुछ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है एक्चुअली. Some in IIT Roorkee, what I have found, that is a very well placed thing, particularly 2024 2025 में बहुत अच्छा जो है प्लेसमेंट हो चुका है. लेकिन मेन यहाँ पे क्या है, देखो, इन IIT रुड़की ऑल्सो व्हाट आई हैव फाउंड, दैट इज योर मैनेजमेंट वाले जो भी ब्रांचेस है, कुछ कुछ देखना कि वहां पे मैनेजमेंट रिलेटेड ब्रांचेस भी है एंड ऑल दिस स्टफ. So there actually it was very good. Department of Management Studies and stuff. But apart from that, in civil transportation also the packages were good, handsome. Civil में structure में भी placement अच्छा है. But that is not the case with all the other branches. Okay, that is absolutely not the case with the other branches. That is, suppose मतलब ऐसी बात नहीं है कि IIT रुड़की में अगर मैं बताऊं आपको, that is इन सम ई के लिए मैं बता रहा हूँ मैं, जैसे कि पावर सिस्टम्स, सिस्टम एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीन ब्रांच में बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है. बट दैट इज नॉट द केस विद ऑल द अदर ब्रांचेस. इन सिविल देयर इज अ ब्रांच कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, वहां पे प्लेसमेंट भी वैसे ही कुछ डिजास्टर टाइप का है. ठीक है, तो दैट इज अ थिंग. अगेन, मैकेनिकल के अगर मैं बारे में बात करता हूँ, तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ब्रांचेस है जहाँ पे कम कट ऑफ में भी अच्छा प्लेसमेंट होता है, जैसे कैड कैम. कम कट ऑफ है लेकिन प्लेसमेंट अच्छा है. दैट इज द स्टोरी. Okay, CSE again, very good placement is there over. So KGP के अगर मैं बारे में बात करता हूँ in M.Tech, then around the packages were varying in between 6 to 11.35 LPA, not that great. If you compare the percentage of the placements with the other IITs, कानपुर में भी तो, कानपुर के तो हालत जो है कुछ कुछ केस में बहुत ज्यादा खराब था, वो भी मैं आपको बताऊंगा. IIT Tirupati, and after that coming to IIT Ropar, many people have got acha VSJ Free Fire. Saint 20 I studied only transportation knowledge, just qualified and worked in private sector. That payment 20 SC Cadet 2023 passed out. Your suggestions? My suggestions for preparation would be given in the next sessions. This session is actually about IIT versus NIT. Just wait for. Definitely you have let your job go and you have come with other things 2025. So definitely all the best. So CTM infrastructure at IIT कहाँ पे? KGP. I will compare just. IIT KGP infrastructure design, in this branch around 75% placement is being recorded. This is a good thing. Packages were in between 7.5 to 12.5 LPA. Okay, 75% placement, which is a good decent number obviously. Okay, Rohit is saying what? Sir, I have got 360 score. Can I expect any NIT environment or geotech? Yes, you can expect. Obviously, you can. But look at IIT Ropar. If you're from mechanical engineering, electrical, or computer science, packages were very good. I mean, percentage of the people who are getting placed, that was good. But if you see the thing about civil, right, or say biomedical, the placement is not that great. But in Ropar, the scenario is going to change, because in Ropar earlier structure branch was not there. Now structure branch is there.
So obviously, placement scenario is going to change. Okay. Music lover, Dhanbad geometrics placement, I've already shown you, but again, for once again for you, the placement scenario of geology, geophysics, and all these things were in between 40 to 50%. Okay, not more than that, 40 to 50%. IIT Mandi, if I say, there is only one branch, that is your structure. Okay. Now, if you see that around 90% placement was there, but the average packages were in between 6 to 7 LPA, not that much higher. IIT Gandhinagar, on the other hand, if you see computer science engineering 100%, electrical engineering 100%, mechanical 93%, but civil around 68% placement was being recorded, and the other branches, sorry, if you talk about the M.Tech story actually, then in mechanical engineering, the placement percentage was not that great. Okay, for civil engineering, right? But if you see the highest packages, then in civil, highest package offered in IIT Gandhinagar was 16, mechanical 20, chemical 25, electrical 30, and computer science 62. But obviously, not everybody has got that. On the remaining IITs, the placement was not that great. But now talking about the NITs, अब समझो, जैसे for example, Prakash Khan has got 624 CE General KGP Environment. Should I accept or wait? Again, Prakash, how can I know that what are the other branches that you have applied for? मुझे कैसे पता? आप कौन से branch में apply कर चुके? Okay. Now, if I again, by the way, in case anyone is still confused or just want an one-to-one counseling session with me, you are always you can join our one-to-one counseling programs just by filling up the Google form, and the payment is 590 fees. Same fees has been kept. Okay. Okay, now suppose this 500, 600 category, this particular thing. Suppose this Prakash Khan, he has got 624 CE General, KGP Environment. Now at 624, what are the other things that he can get? NIT Trichy Transport he can get? Yes, he can. Structure, I'm not sure, may or may not. CTM in Suratkal, Warangal, yes, he can. Obviously, the placement percentage is way better in it. Okay, that's the story. But if you are interested in environment only, that yes, I want environment and I want to do research in further rounds, then definitely it's a very good thing. Go for it. Best thing. M.Tech Transportation Engineering Management, you can get around, if you see in NIT Trichy, 96% placement. Structural engineering, 91.3%. Environmental engineering, 100% placement. Computer science, 100%. Then production also around 100%. VLS 100%. Okay, so this kind of thing is there actually, you can see over here. So M.Tech electrical also 89%, chemical 92% placement is there. So that is actually the essence of it. Guwahati infrastructure and management के बारे में बताइए, क्या बताऊं? Placement के बारे में जानना है. Now talking about NIT Warangal, where CTM and etc. branches are being offered. Let me just show you and present before you. Construction Technology Management NIT Warangal. Look at that, 96.4%. Almost everybody has that means got placed. Highest it is 13 LP. Now, the point is at NIT Warangal cutoff, CTM cutoff. What is the cutoff for NIT Warangal currently going, suppose? And at till what particular thing it can go. I am also saying you, based on cutoff, we should compare, right? That's the main thing. That's what actually I wanted to do over here. That suppose in NIT Warangal, okay, you are getting, say, environmental, or say like in general category, I am saying actually. Let's compare with respect to general category, the other things. What infrastructure and this thing is very good actually. Around 88% placement was being recorded. Infrastructure engineering management. Okay. Which is a good thing actually. Infrastructure engineering management, I'm telling you actually in Guwahati. बता देता हूँ. Yeah, but the highest package that was being recorded was 18.07 LPA. Obviously, it's a non-core job. The lowest package that was being recorded was 7.2 LPA. A good thing, by the way. Over 70, 8% placement, 78% placement was being recorded. Okay.
आ गया यार। Now talking about this Construction Technology Management branch and what are the possible cut-offs and stuff, जो मैं आपको बताना चाह रहा था एक्चुअली कि जैसे CTM किसी को वारंगल में मिल चुका है. What is the round one cutoff of CTM Warangal? 509. That means still 450 general category cutoff you can easily get. Now the point is at 450, what are the other branches that you can get? Okay, Construction Technology Management में आपको क्या और एक्स्ट्रा मिल सकता है? ओके, दैट्स द मेन स्टोरी. नहीं अनुराग, ब्रांच पहले से था बट सिविल पहले अलाउड नहीं थे. दैट्स द मेन थिंग. अब कहानी ये है, वारंगल में देखो सीटीएम में आपको 450 460 गेट स्कोर में जनरल कैटेगरी में सपोज यू कैन गेट सीटीएम. अभी 509 तक आ चुका है तो फिर जो है बाद में आ ही जाएगा, समझ रहे हो. अब 509 में ही अगर मैं कंपेयर करूं, देन यू टेल मी 502 मैकेनिकल, अगेन वेरी इनकम्प्लीट क्वेश्चन. व्हाट्स योर कैटेगरी? कैन आई गेट थर्मल मैन्युफैक्चर? वेरी इनकम्प्लीट क्वेश्चन. तो द पॉइंट इज एनआईटी वारंगल में आपको सीटीएम में क्या पैकेज और क्या प्लेसमेंट मिल रहा है. देखो 450 कट ऑफ में, 450 कट ऑफ में आपको 96.4% प्लेसमेंट की गारंटी है. 13 एलपी हाईएस्ट पैकेज, दैट मींस नॉन कोर इज एलिजिबल. यू आर एलिजिबल फॉर नॉन कोर. यहाँ पे आप कंपनीज का नाम भी देख सकते हो. यहाँ पे कंपनीज लाइक क्वांटिफाई एनालिटिक्स, ओके, फेडरल बैंक, इन्फिनिटी लर्न, पीडब्ल्यूसी इंडिया, दीज आर ऑल योर non-core companies which are offering 10 LPA plus packages. कट ऑफ कितना जनरल में? 450. कट टू आप 450 जनरल कट ऑफ में आईआईटी में क्या ला सकते हो बोलो? क्लाइमेट साइंस, वाटर रिसोर्स, अर्थ सिस्टम साइंस, इससे ज्यादा कुछ? जहां पे परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट्स इज नोवेयर मोर देन 40% एंड द पैकेज इज लोअर देन 6 LP इन मोस्ट ऑफ द केसेस. एक दो को हो सकता है ज्यादा लग जाए, ठीक है. इवन आई एम टेलिंग यू, जैसे टॉप आईआईटीज हो, उनका जियोटेक का प्लेसमेंट देखो, 80% प्लेसमेंट है. जैसे कानपुर, कानपुर में 80% प्लेसमेंट है जियोटेक का. कट ऑफ देखो उसका 450 कट ऑफ में आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजर मिलेगा 460 470 में, विच इज इनक्रेडिबल. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नॉन कोर का पैकेज ऑलमोस्ट किसी को नहीं मिला है. देखो 8.5 LPA किसी को मिला था, वही बायजूस एंड समथिंग शायद आए थे. 8.5 LPA, अभी तो उनका भी हालत खराब ही है बहुत. 90% प्लेसमेंट वाज बीइंग रिकॉर्डेड. ओके. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इफ यू सी, in environmental engineering 13 LPA package was being given. Quantify analytics, फेडरल बैंक, मतलब नॉन कोर प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल हुआ. ओके, बट ऑल्दो अराउंड 52% प्लेसमेंट वाज बीइंग रिकॉर्डेड इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में अराउंड 55% प्लेसमेंट वाज बीइंग रिकॉर्डेड. बट एनआईटी वारंगल का जो है, एनआईटी वारंगल का जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में वहां पे ज्यादा अभी एनवायरमेंट के तरफ एम्फोसिस है. ओके, दैट इज द स्टोरी. Getting my point, what I'm trying to say, लोग सिर्फ, बहुत सारे लोग, majority of the people while doing the counseling sessions also I found there are many people who are just dying for IIT. उनको सिर्फ IIT चाहिए, IIT का टैग चाहिए सिर्फ. Okay, I have 505 OBC NCL. Can I get NIT Warangal CTM this year? Yes, yes, obviously you will get it. So that's the point actually wanted to say over here. Understanding what I'm trying to say. तो ये चीज है एक्चुअली. बहुत सारे लोग जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, देयर आर मेनी पीपल हु आर जस्ट लुकिंग फॉर सी. सर आप यकीन नहीं करोगे, अराउंड 500 जैसे अभी का जो स्कोर है, जिस गेट स्कोर में आपको एनआईटी सूरतकल का मान लो सीटीएम मिल रहा है, या एनआईटी वारंगल का, या इवन जियोटेक मिल रहा है, या कोट मिल रहा है, एट दैट सेम गेट स्कोर पीपल आर गेटिंग वाटर मैनेजमेंट इन आईआईटी खड़गपुर, लैंड एंड वाटर रिसोर्स. लोगों को फिर भी मंजूर है. लोगों को लगता है कि चलो यार, हमको सिर्फ उससे मतलब है कि हाँ हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे, ठीक है. इफ यू आर इनटू रिसर्च, अगेन आई एम सेइंग, जस्ट गो फॉर आईआईटीज. कोई भी आईआईटी का नाम पकड़ के घुस जाओ वहां पे, रिसर्च में हेल्प करेगा. सर कैन आई प्रिपेयर फॉर गेट विद वारंगल ट्रांसपोर्ट? ऑब्वियसली यू कैन प्रिपेयर. प्रिपेयर तो आप कहीं से भी कर सकते हो. बाय द वे यार, लाइक नहीं कर रहे हो, 73 पीपल आर वाचिंग एंड नॉट इवन 50 लाइक्स क्रॉस्ड. यार ऐसे मन नहीं अच्छा लगता यार.
सर सूरत का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है? गॉट एनआईटी सूरत कल, बट आई वांट टू गेट आईआईटी 490 सिविल ओबीसी। सूरत का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, और वेट करो तो और ज्यादा बेटर चीजें मिलेगा। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ओके। स्टिल हियर पीपल हैव गॉट 13 एलपीए पैकेज। वेस्ट मैनेजमेंट जैसे ब्रांच जिसको लोग वेस्ट मानते हैं, वहां पे भी लोगों को 10.35 एलपीए का पैकेज ऑफर हुआ है एनआईटी वारंगल लास्ट ईयर। कंपनीज लाइक पीडब्ल्यूसी इंडिया एंड इमर्जी स्पेशली जो है, they have offered 10.35 LPA packages in NIT Warangal. Although the percentage of the placements was not that great, I don't agree. But आप कट ऑफ तो सोचो, 350 कट ऑफ में वेस्ट मैनेजमेंट मिल रहा है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआई 370 कट ऑफ में लोगों को मिल रहा है, इवन 300 एंड समथिंग कट ऑफ में जो लोगों को मिल रहा है, which is a great thing, right? Apur Singh, IIT Kanpur Water Resource, around 50% placement has been registered. Sandeep, sir, Jagga Ulala, okay. What's your actual name? Sir, 420 OBC. Will I get BHU? Sir, मैं गया था sir, वहाँ I reject earthquake geometry of ISM in round 3 and 6. Just wait actually. Have you applied also for CCMT? Transportation engineering, many people were actually talking about transportation engineering placements. 82% placement was being recorded. Look, as the highest package was not that great because mainly core लोगों को यहाँ पे मिला है. But ऐसी बात नहीं है कि नॉन कोर में एलिजिबल नहीं थे. People were eligible for non-core, but people didn't get it actually. That's the story. By the way, you can please take the membership of my channel only at 29 rupees. And by the way, you people know whatever money from Google, whatever is being received, that is basically going to the betterment of the underprivileged. So you just can take the membership of my channel at 29 rupees only. Okay. Now Warangal CTM और Trichy Transport कंपैरिजन आपके सामने है, खुद देख लो। वारंगल सीटीएम भी मैंने बता दिया, 3G ट्रांसपोर्ट का भी मैंने बता दिया, वैसे आपके सामने। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट एनआईटी वारंगल के भी जो वाटर रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स ब्रांच में 42.1% प्लेसमेंट वाज देयर। Okay, I got Geotech of NIT Rourkela, but don't know how it is. You just float, Jagga Abhishek. You just float. Okay, Abhishek. आप बस फ्लोट कर दो, आपको मच बेटर ऑप्शंस मिलेगा 420 ओबीसी में इंडियन आईटीज इफ यू वांट टू गो फॉर प्लेसमेंट्स। ओके, ऑब्वियसली इन आईआईटीज देखो लैब फैसिलिटीज एंड ऑल दिस थिंग्स ये थोड़ा बेटर मिलता है, तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के लिए इसलिए बेटर है। और अगर आप और भी फर्दर स्टडीज की पीएचडी वगैरह जो करना चाहते हो, तो वहां पे इंटरव्यूज में वो लोगों के मैटर करता है कि आप आईआईटी से हो, अच्छा गुड, बस इतना ही। अगर आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो तो घंटा फर्क पड़ता है कि आप आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, आप कौन से ब्रांच से हो, स्ट्रक्चर से हो। फॉर नॉन कोर प्लेसमेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, सोचो ना, आप खुद सोचो एक बार, जिनको आप खुद एक बार चीजों को इमेजिन करके सोचो, नॉन कोर प्लेसमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। इन स्ट्रक्चर, ठीक है, व्हाट वाज द हाईएस्ट पैकेज इन स्ट्रक्चर? 8.5 एलपीए। कितना कट ऑफ होगा एनआईटी वाला जनरल कैटेगरी में? मान लो 500 600 कुछ होगा, राइट? 8.5 पे लुक एट दिस रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, कितना हाईएस्ट पैकेज है? 13 एलपी। कितना कट ऑफ होगा इसका? 400। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So it does not depend upon this cutoff and branches and all. It depends upon how well you are equipped with those particular things. आप किस कैसे खुद को जो है इक्विप कर चुके हो, तो ये सब चीजों से कोई मैटर नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग? Talking about this thing again, NIT Suratkal, people are concerned about. Structural engineering में around 85% placement was there, geotechnical में 89%, environment में 62, transportation में 77 and construction technology में around 90% placement was being recorded. Now talking about your NIT Calicut. NIT Calicut again आप देखो, the offshore structure अगर आप देखोगे, environmental geotechnology में around 50% के आसपास placement है। Traffic and transportation planning में around 75% placement was being recorded. Structural engineering and offshore structure दोनों में ही 100% placement is being recorded. Water resource में around 60% placement is being recorded. Talking about your mechanical engineering में around machine design में 92% placement and industrial engineering में around 80% placement was being recorded. Now if you see the packages, अब पैकेज एक बार देख लो, जो ऑफशोर स्ट्रक्चर है वहां पे पैकेज देखो कम है, भले ही 4. अरे रुको भाई, आऊंगा मैं। एनआईटी भोपाल स्ट्रक्चर 4.2 से 7 एलपीए के बीच में, एनआईटी कालीकट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अराउंड 4.2 से 13.58 वाज द हाईएस्ट पैकेज। ओके, दैट इज अ वेरी गुड थिंग।
बाय द वे सी M.Tech वाटर रिसोर्स, यहाँ पे आप देखो 60% प्लेसमेंट वाज बीइंग रिकॉर्डेड गाइस, राइट। वाटर रिसोर्स जैसे ब्रांच में भी, यहाँ पे भी भले लोएस्ट पैकेज जो अराउंड 6 LPA के आसपास है, बट द हाईएस्ट पैकेज वाज अराउंड 11 LPA। केमिकल में अराउंड 10 LPA हाईएस्ट पैकेज गया है, कंप्यूटर साइंस में अराउंड 36 LPA हाईएस्ट पैकेज गया है। मेनी पीपल वाज स्केप्टिकल अबाउट NIT कालीकट कंप्यूटर साइंस। आप खुद देख रहे हो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है, हाईएस्ट पैकेज 36 तक जा चुका है। क्या चाहिए और यार आप लोगों को? ओके, प्लीज बताइए परसेंटेज नॉन कोर कितना, कोर प्लेसमेंट कितना? बाय द वे हाँ, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग एक चीज जानना चाहते हैं कि कितने परसेंट लोग नॉन कोर प्लेसमेंट मिलता है। अराउंड 25 to 30% पीपल गेट नॉन कोर प्लेसमेंट्स। ओके, एंड दैट इज ओवरऑल फॉर अ ब्रांच, फॉर सिविल ब्रांच। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट फॉर ओनली वन पर्टिकुलर ब्रांच। और ऐसे कोई फिक्स नहीं रहता कि अच्छा आप CTM से हो इसलिए आपको नॉन कोर में बैठने दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। सबको बैठने दिया जाता है। जब जो CTM से उनको लग गया है पैकेज, वो तो मैं आपको दिखाया अभी कि जो वाटर रिसोर्स से जिनका लगा है पैसे, उनको भी 13.5 LP का पैकेज लगा है। तो क्या उनको ऐसे बोला कि अच्छा आप वाटर रिसोर्स से हो इसलिए आपको 13.5 दिया जाएगा? नो, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंडिविजुअल क्वालिटीज एंड हाउ वेल यू आर इक्विप्ड विद दोज थिंग्स। Jagabhishek, may I get NIT Allahabad structure in second or third round, sir? How is please, Jagabhishek, please mention your score and category. Otherwise, how can I say? PhD is available in everything, Tripti. ये क्या सवाल पूछ लिया आप? PhD सब में available है. Sir, IIT KGP environment versus Guwahati infrastructure management. What would you choose and why? Ronin, the thing is that if I am to choose, suppose अगर आप मुझे पर्सनली बोलते, मुझे पर्सनली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता था और मैं कभी भी प्लेसमेंट के लिए कोई IIT गया नहीं था, तो अगर आप मुझे पूछते पर्सनली तो मैं IIT KGP एनवायरनमेंट लेता, मेरे घर के भी बगल में, तो मैं ऑब्वियसली ये लेता। बट अगर आप प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे, ओके, देन आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू गुवाहाटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, स्पेशली द नॉन कोर प्लेसमेंट्स सिनेरियो वहां पे थोड़ा बेटर है। दैट इज द स्टोरी। Okay, by the way, you can easily take the membership of ours and so that you can get priority replies. Okay, if you say about NIT Calicut, mechanical engineering, then manufacturing technology maybe 83% placement has been recorded. Okay, talking about NIT Rourkela, people are being confused actually in NIT Rourkela also. There people have got placed in between, the packages are being offered in between 6.5 LPA to 13.58 LPA, which is a good thing, but the percentage of the placements, if I say civil engineering, was not that great. Okay, that is around your 77% or 80% around for structures, transportation के around 75% है. And if I say about the other branches like geotech and environment, that is around 50%. But there was one branch in NIT Rourkela also, atmospheric science. There also around 70% people got placed. That was nice. Okay. Now talking about where are the members comments? Yeah, may I get NIT Allahabad structure in second or third rounds? 420 OBC currently. Rourkela geotech around 50% placement as I've told you, but definitely float it. Okay, float it. Okay, you belong to Allahabad. Allahabad के placement statistics मैं अभी बताऊंगा आपको, but it's better actually to go for float actually. अभी आप float कर दो. PG placement statistics talking about MNIT Jaipur in agricultural planning around 60% placement there. Center for Energy Environment around 94% placement. Chemical engineering 100% placement. Chemistry around 70%. Civil engineering, if you see, around 55% placement is there in civil engineering, which is not a very good sign, I will say. But in MNIT Jaipur, the placement is very good in structure and transportation also ठीक ठाक है. But apart from that, the other branches placements were absolutely not that good. Okay. कोर में हाईएस्ट पैकेज कितना होता है? कहाँ के बोल रहे हो? ओके, तो टॉकिंग अबाउट योर अगेन मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पढ़ना है जयपुर में, देन देयर यू हैव गॉट वेरी गुड प्लेसमेंट्स. ओके, बट पीपल आल्सो आर गेटिंग सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट, देयर आल्सो प्लेसमेंट इज नॉट दैट ग्रेट. NIT सूरतकल में M.Tech करे जियो इन्फॉर्मेटिक्स में
देन आईआईटी बॉम्बे से जीएनआर में पीएचडी करे, सो हाउ इज इट? यस यू कैन डू अनिकेत, ऑब्वियसली अच्छी बात है, अगर आपको हायर स्टडीज करनी है बिल्कुल जा सकते हो। ओके, सो दैट्स द स्टोरी। नाउ टॉकिंग अबाउट वीएनआईटी नागपुर, तो नागपुर में आप जैसे देख सकते हो कि अगेन यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है, दैट इज अगेन योर स्ट्रक्चरल डायनामिक्स एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, सीटीएम एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इनमें ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट इज बीइंग रिकॉर्डेड। बट इफ यू लुक एट द अदर ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग like water resource, transportation, geotechnical, it's not that great simply. Okay. If you talk about the mechanical thing, industrial engineering में अच्छा placement है, कैड कैम में भी ठीक ठाक है मोटा मोटी, वीएलएसआई डिजाइन में भी देखो उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम अगेन ऑन द अदर एंड हैज रिकॉर्डेड अ गुड प्लेसमेंट। बहुत हेल्प की सर गोइंग फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनली। ओके रोनिन, ऑल द बेस्ट। यस तृप्ति, पीएचडी इज डेफिनेटली अवेलेबल इन सीटीएम, क्यों नहीं अवेलेबल होगा, पीएचडी सब में अवेलेबल होगा। ओके, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप देखो स्ट्राइकिंगली अराउंड 60% प्लेसमेंट वाज देयर, बट देखो मेन जो पॉइंट मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाह रहा था कि देखो यहाँ के हाईएस्ट पैकेज देखो, हाईएस्ट पैकेज जो है कंप्यूटर साइंस को छोड़ के, कंप्यूटर साइंस का हाईएस्ट पैकेज 64 तक गया है, व्हिच इज अ रियली गुड थिंग मैन। सम पीपल आर स्केप्टिकल, जो कंप्यूटर साइंस से मेरे से काउंसलिंग करवाना चाह रहे थे, नागपुर के कंप्यूटर साइंस से जो है बहुत सारे लोग मतलब वाकिफ नहीं थे, दे वर लाइक कि not that great perhaps sir। NIT Calicut I already discussed, you were talking about Vivek Kumar, industrial power and automation, yes 100% placement is being recorded, but the highest package is 16 LPA, lowest package is 8 LPA। Vivek Kumar, सुमन मेरा सर सिविल इंजीनियरिंग को बंद क्यों नहीं कर देते, फिर बनाएगा कौन यार, इस घर में बैठ के आप कर रहे हो, टाइप कर रहे हो मैसेज, सिविल इंजीनियर द्वारा डिजाइन है दोस्तों, को अगर पता ही नहीं रहेगा कि कैसे डिजाइन करते है ना। IIT Dhanbad placement 34% registered this year up till a certain, only in the first phase, only in the first phase IIT Dhanbad environment placement में 34%, second phase में जो है placement percent is going to be more than 70%, last year भी 67% हुआ था और इस बार भी होगा। okay, and people also are getting placed in off campus placements and stuff like that। SBNIT सूरत, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानना चाहिए था। एंड लुक यार, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में उतना अच्छा खासा प्लेसमेंट नहीं है एसबीएनटी सूरत में, जैसे नागपुर में था। बट इफ यू सी अबाउट दिस थिंग अगेन इन एसबीएनटी सूरत, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अच्छा खासा प्लेसमेंट है, अराउंड 62% प्लेसमेंट है, बट अगेन पैकेज जो है बहुत ज्यादा हाई नहीं है, एक दो को 14 एलपीए का पैकेज मिल गया था एसबीएनटी सूरत से भी। थर्मल से अराउंड, मैकेनिकल में थर्मल से अराउंड 73% प्लेसमेंट है, इज अ गुड थिंग। जियो टेक्निकल में अराउंड उतना कुछ अच्छा खासा प्लेसमेंट नहीं है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में अराउंड 60% प्लेसमेंट है, अराउंड 5 to 6 एलपीए के बीच में। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ऑन द अदर हैंड 70% प्लेसमेंट है। देखो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग नागपुर में उतना अच्छा खासा नहीं था, बट सूरत का जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है वो अच्छा है। सीटीएम अगेन सूरत का 100% प्लेसमेंट, वेरी गुड प्लेसमेंट्स हैज बीन रिकॉर्डेड ओवर देयर, सो दैट इज अ स्टोरी। नाउ टॉकिंग अबाउट एमएनआईटी भोपाल, तो एमएनआईटी भोपाल का अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो है अराउंड 100% प्लेसमेंट, अगेन 90% प्लेसमेंट इज बीइंग रिकॉर्डेड, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर, the other branches are really suffering। okay, like out of 84 total people who have been registered, only 40 people have got placed। परसेंटेज वाइज इफ यू सी, मतलब टोटल जितने एलिजिबल थे उनमें से सारे लोग जो है प्लेसमेंट के लिए गए नहीं थे, बट अराउंड 63% प्लेसमेंट, 62.6% प्लेसमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड सिविल। बट इफ यू सी ओनली स्ट्रक्चर्स, वहां पे ही आपका 100% प्लेसमेंट है। ट्रांसपोर्टेशन में भी अच्छा खासा है, अराउंड 75% के आसपास, बट इफ यू सी द अदर ब्रांचेस, एनवायरमेंट में भी अराउंड 55% के आसपास प्लेसमेंट है, बट बाकी ब्रांचेस में। सर विल आई गेट स्ट्रक्चर जियोटेक ट्रांसपोर्टेशन एनी आईआईटी, applied for all, almost all IIT 420 OBC, or obviously you should go for NITs float 420 OBC, you can get much better options, Jagga Abhishek।
So just wait for the better NITs and better options if you are at all serious about placements. अगर आप placements के regarding serious हो तभी. Okay, 389 EWS any chance structure NIT सूरत नागपुर जयपुर मुश्किल है. मोहम्मद दानिश. मुश्किल है. MNIT इलाहाबाद बहुत सारे लोग जो है जानना चाह रहे थे. तो सिविल इंजीनियरिंग में जैसे कि मैं देख रहा था यहाँ पे स्ट्रक्चर में अराउंड जो है you see only structural engineering then around out of 20 people in structural engineering around 16 people got placed in NIT Allahabad 15 people that means around 75% placement is there in structure NIT Kurukshetra maybe around 19 में से 15 people got placed around 80% placement again एनवायरमेंट का प्लेसमेंट कुरुक्षेत्र में अच्छा नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में अराउंड 50% प्लेसमेंट है जियोटेक्निकल में अराउंड 60% प्लेसमेंट है बट लुक एट दी पैकेजेस यहाँ पे पैकेज उतना कुछ अच्छा नहीं है अराउंड 5 to 7 LPA के बीच में again 1% in transportation got 11 LPA package and 1% in environment got 11 LPA package but both were obviously non-core package कंप्यूटर इंजीनियरिंग में साइबर सिक्योरिटी में एंड अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है अराउंड 80% के आसपास प्लेसमेंट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में but the packages were not very high मतलब as compared to नागपुर एंड स्टफ कुरुक्षेत्र में अराउंड 23.5 25 तक भी जाता है हाईएस्ट पैकेज बट लोएस्ट पैकेज देखो कंप्यूटर साइंस में 6 LPA लगता है व्हिच इज अ शेम फॉर कंप्यूटर अर्थ सिस्टम साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर बारे में बताइए सर प्लेसमेंट नहीं होता है अगर पैकेज मतलब पढ़ाई करना चाहते हो हायर स्टडीज देन यू मे गो अर्पित अग्रवाल हाई सर गॉट एन ऑफर फॉर MS रिसर्च ओके गुड इन डिजास्टर मैनेजमेंट IIT go and VLS at NIT Meghalaya which is my 23rd choice my core branch in data science my grade score 395 general float कर दो आपको बेटर NITs में VLSI मिल जाएगा इफ यू आर कंसर्न्ड विथ प्लेसमेंट देन गो फॉर NITs देखो तो हम अभी तक जो कंक्लूजन में हम पहुंचे कि जिनका गेट स्कोर बहुत हाई है ठीक है तो IIT में मिल रहा है अपना चॉइसेस कोर में अगर जाना चाहते हो तो इफ योर गेट स्कोर इज लो प्रेफर NITs बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट मच बेटर ब्रांचेस ओवर देयर आपको मच बेटर ब्रांचेस यहाँ पे मिलने का चांसेस है दैट इज द मेन थिंग दैट इज द कंक्लूजन वी हैव ड्रॉन एंड ऑन द अदर एंड अगर आपको ऐसा चाहिए कि मुझे IIT में कोई भी ब्रांच चलेगा तो चूज वाइजली क्योंकि हम कुछ कुछ नॉन कोर ब्रांचेस देखे जिसमें बहुत अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है लो कट ऑफ में भी जैसे IIT हैदराबाद में हम देखे ई वेस्ट मैनेजमेंट फिर हम देखे IIT भुवनेश्वर में क्लाइमेट साइंस में फिर हम देखे IIT मद्रास के ओशन टेक्नोलॉजी देन दिस काइंड ऑफ ब्रांचेस फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जिसका कट ऑफ जो है कम है बट द पॉइंट इज इनमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा है ओके जल्दी जल्दी एक बार यार लाइक और शेयर कर दो सभी लोग आई वांट 100 लाइक्स क्विकली तो ये चीज है बट अगेन ऑन द अदर एंड देयर आर सम ब्रांचेस लाइक अर्थ सिस्टम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट हाँ दिस काइंड ऑफ बहुत सारे ब्रांच है वाटर मैनेजमेंट एक्वाकल्चर एंड स्टफ लाइक दैट ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस जिसमें पैकेज बहुत कम है तो अगर आपको प्लेसमेंट ही लेना है then definitely go for this by the way you can easily check the subscription of my channel actually you can just tap on the join button to get the perks and all these particular YouTube things they go into the well-being by the way आप जल्दी जल्दी जो है आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए क्विकली Our systems and technology IIT Kharagpur as I've told you Sahib Navgare placement wise not that great if you want to go for research you may I upgrade to SIP in NITR from CN if you have put it at a higher position then you can obviously what is this score? I don't know your grade score category आप कहाँ पे रखे हो मुझे कैसे पता होगा ओके सर NIT इलाहाबाद प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड जियोटेक एंड पैकेज रेंज सर इलाहाबाद में जैसे मैंने स्ट्रक्चर का प्लेसमेंट जैसे मैंने बताया आउट ऑफ 20 पीपल 16 पीपल गॉट प्लेस्ड व्हिच इज अ गुड थिंग एंड जियोटेक में प्लेसमेंट इज नॉट एब्सोल्युटली 30% के आसपास दैट ग्रेट and packages were in between 6 to 9 LPA. Okay, now talking about कुरुक्षेत्र में जैसे इलेक्ट्रिकल एंड जो है इलेक्ट्रिकल एंड पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देयर वर पीपल आल्सो हु आर कंफ्यूज बिटवीन कि सर हमको जो है इंटर्नशिप नहीं मिलता इंटर्नशिप मिलता है सर बिल्कुल देखो कुरुक्षेत्र जैसे NITs में भी सिविल में इंटर्नशिप मिला है लाइक
एंड कंप्यूटर साइंस में भी इंटर्नशिप मिला। सो इंटर्नशिप यू आईएसटी शिवपुर, इसके बारे में बहुत सारे लोगों का डाउट था सर। 2023 के जो पास आउट बैच है, देख ही रहे हो सर, ऊपर में एकदम लेटेस्ट डेटा आपके लिए लाया हूँ। 2023 के जो पास आउट बैच है उसी का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर कंप्यूटर साइंस, देन आप समझ रहे हो यहाँ पे, दैट इज 6 people who might have secured jobs under individual initiatives under higher category and all this. तो 12 लोगों में से 6 जो है वो अपने से कहीं से प्लेसमेंट जुगाड़ कर लिए। 6 लोग प्लेसमेंट बैठे और 6 में से 6 ही प्लेस्ड हो गए। नाइस थिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अगर मैं बताऊं तो 15 लोगों में से अराउंड अराउंड जो है 6 लोग अपना जॉब ये कर लिए, 9 को ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 22 पीपल गॉट, आउट ऑफ 22 पीपल अगेन सब देखो प्लेस्ड है, लेकिन कोई हायर स्टडीज में गए या फिर कोई मतलब ऐसे कुछ खाली हाथ नहीं लौट रहे कोई। दैट्स द मेन थिंग। अगेन अ गुड ऑप्शन। मैकेनिकल में आप देख रहे हो यहाँ पे, मैकेनिकल में इफ आई से that out of 23 people, out of 18 people actually, 5 people got on campus placement, which is a good thing, but other people also got higher studies into it, all this 48 people में से in civil engineering 16 people got on campus placement, but rest of the 32 people students who might have secured jobs or under individual initiatives or joined higher studies and not placed through campus processing. तो ये चीजें यहाँ पे आपको मिल रहा है, राइट। आयुष कुमार स्कोर 494, ओबीसी भुवनेश्वर जियोटेक में मिला है। खड़गपुर गुवाहाटी में कोई ऑफर मिलने का चांस है? मिल सकता है सर, ऑब्वियसली यू कैन गेट वाटर रिसोर्स, वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स मिल सकता है। 393 एससी में देखो इनको आईआईटी रोपर में वाटर रिसोर्स मिला है। आईआईटी एज दिल्ली एंड रुड़की, कैन आई गेट एनी ऑफ दिस? यस, यू कैन गेट सम वाटर रिलेटेड ब्रांचेस, हाइड्रोलॉजी इन आईआईटी रुड़की, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर ये सब जो ब्रांचेस है अगर आप अप्लाई कर चुके हो, सैनिटरी इंजीनियरिंग। वीएलएसआई में जो है अराउंड आउट ऑफ 8 पीपल ऑलमोस्ट 7 पीपल गॉट प्लेस्ड। मटेरियल साइंस में भी आउट ऑफ 9 पीपल, आउट ऑफ 8 पीपल 3 पीपल गॉट प्लेस्ड। फूड प्रोसेसिंग में आउट ऑफ 18 पीपल 9 पीपल गॉट प्लेस्ड ऑन कैंपस। रेस्ट ऑफ द पीपल आल्सो गॉट प्लेस्ड समवेयर, इट्स नाइस। अर्थ साइंस में नॉट दैट ग्रेट सिनेरियो इज देयर, मोस्टली पीपल गॉट इनटू हायर स्टडीज। दैट्स द मेन थिंग, बी द चेंज। आई ऑल्सो डोंट नो, बोलने में अच्छा लगता है बी द चेंज, मेरे को तो अभी तक जो है सिर्फ इतना ही समझ में आया, बी द चेंज, दैट इज people don't look, matlab I've been doing counseling for so long and I'm surprised to see some students, they don't know, they don't want to go for placement और उनको placement चाहिए। सबसे जो मेरे को कंफ्यूजिंग लगता है चीजें, दे आर सेइंग आपको क्या चाहिए सर? हमको प्लेसमेंट चाहिए। तो फिर प्लेसमेंट चाहिए तो फिर इसमें क्यों नहीं आ रहे हो आप टॉप एनआईटीज में? नहीं सर हमको आईआईटीज में जाना है। क्यों सर? वो टैग सर, टैग ले करोगे क्या आगे? आपको पीएचडी करनी है तो वो टैग की वैल्यू है, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर सब में रह के आपको मैं बता रहा हूँ, उस टैग की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ रिश्तेदारों में बोलने में अच्छा लगता है, अरे आईआईटी बॉम्बे से, बस इतना है। मुझे आईआईटी बॉम्बे से ऑन कैंपस 9.5 LPA का जॉब ऑफर मिला था। आई वाज फ्रॉम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, व्हिच आई डिड नॉट डू ऑब्वियसली। आईआईटी खड़गपुर मीडियन पैकेज डिजाइन का कितना है बता रहा हूँ, एक सेकंड। 8.75 LPA, मैं 9 LPA मान के चलो, 8.75। Okay, so that's the story actually. I also don't know that what are driving them towards them. Placement नहीं है IITs में, जो लोअर IITs मतलब जो टॉप ब्रांचेस है या फिर जो हायर, लोगों को सिर्फ दिखावा में लोग इतना ज्यादा जो है ज्यादा जा रहे हैं। I don't know what is the reason. Structural dynamics and structural engineering. Structural dynamics is obviously a subset of structural engineering. Structural engineering consists of two parts, अगर आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। स्ट्रक्चरल स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो ये डायनामिक्स जो है मेनली अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर की जो डिजाइन है उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, अराउंड 60% प्लेसमेंट है प्रोजेक्ट का। नेवल आर्किटेक्चर में तो अराउंड 70% है। ओशन इंजीनियरिंग
एंड नेवल आर्किटेक्चर में अराउंड वही 67% के आसपास प्लेसमेंट है पैकेज जो, बट इफ यू गेट आईआईटी मद्रास ओशन इंजीनियरिंग वहां पे 90% के आसपास प्लेसमेंट, खड़गपुर में अराउंड 67%. So that's the story actually, which is definitely good. Regarding the NIT Silchar, if you say, NIT Silchar में जो है M.Tech में around 6.99 LPA से 15.38 LPA के बीच में जो है लगा था. एंड जो है if you say about civil, then around civil में जो है around 41% overall placement है in NIT Silchar. But in structural engineering जो है around आपके 74% placement has been registered. 424 OBC, NIT, WCTM. Yes, you can get. You wait further. हो सकता है कि आपको मिल जाए. Okay. So thank you for being here for so long. Okay. Okay. So thank you again for being here for so long. By the way, good night. Good night, everybody. एनवायरमेंट में प्रिपरेशन का टाइम मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है सर. सिविल, चलो अर्पित का क्वेश्चन मैं लास्ट में ले लेता हूँ सर. सिविल 586, कैन आई गेट एनआईटी के सीडीएस इन फर्दर राउंड्स? हो सकता है कि मिल जाए अर्पित, हो सकता है आपको स्पेशल राउंड में जाना पड़े. कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर मेरा नेक्स्ट सेशन एक आ रहा है तो उसको देख लेना. आई गॉट 3 स्ट्रक्चर इन फर्स्ट राउंड एंड इन दो स्ट्रक्चर्स इन यूएपी. गुड. वेट करो, इन दो स्ट्रक्चर से तो बेटर ही है 3G स्ट्रक्चर. टाइम करना चाहिए, वेट करना चाहिए खड़गपुर के लिए. वेट करो, वेट करो. बट भुवनेश्वर इज गुड एक्चुअली फॉर जियो टेक्निकल, मैंने आपको दिखाया. बट जियो टेक्निकल ब्रांच का ही अभी मार्केट थोड़ा डाउन जा रहा था. जैसे एक बार लास्ट टू लास्ट 100% प्लेसमेंट हुआ था जियो टेक्निकल भुवनेश्वर, बट आफ्टर दैट इट्स बीन ऑन डिक्लाइनिंग मोड. ऑब्वियसली पैकेज भी कम ही है. फ्लोट और सरेंडर का ऑप्शन आ रहा है, कौन सा चूज करूं? फ्लोट करो. ओके, थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर सो लॉन्ग. बाय बाय. पीएसयू का बता दीजिए, पीएसयू का क्या बताया सूरज? पीएसयू एनआईटीज में नहीं आता डायरेक्टली. जेयू में एमटेक में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्लेसमेंट होता है एमटेक में. ओके, 424 एनआईटी डब्ल्यूसीटीएम आई ऑलरेडी टोल्ड यू. पीएसयू ऑलमोस्ट नहीं आता यार एनआईटी के एमटेक के प्लेसमेंट में. एनआईटी आईआईटी में ऑलमोस्ट नहीं आता है. पीएसयू का कट ऑफ के ऊपर मेरा अलग से सेशन है, वो देख लो सूरज. और इस बार कौन कौन से पीएसयू आने वाला है उसके में भी मेरे ऊपर एक सेशन है, उसके ऊपर भी, तो वो भी आप देख सकते हो. ठीक है, चलो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. बाय बाय, गुड नाइट. रितेश सरोज, यस पॉसिबल, स्लाइटली पॉसिबल हो सकता है इफ यू वेट फॉर दिस क्वेश्चन. बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू. यस, मरीन मरीन का चांस है आपका. स्पेशल राउंड जग्गा अभिषेक. आईओसीएल कभी कभी आता है सिलचर जैसे इसमें, बट सिविल में तो ऑल दिस थिंग्स ऑलमोस्ट नहीं आता यार, और एमटेक में तो नहीं आता है. बीटेक में कभी कभी एक दो केस में ले लेते हैं, अदरवाइज नहीं आता. चलो थैंक यू.